The economy of a country depends upon a number of activities based upon agriculture, manufacturing, and service sectors. Each of the activity has its unique contribution towards the GDP of the country. One of the most important fuels to the country's growth engine is the government's expenditure, which is in fact financed by the revenue generated from various sources. Except some Gulf countries, tax collection is one of the major sources of revenue for the government throughout the world. And as per the data sourced from Business Today, in December 2017, the share of indirect tax in total tax collection in India is 51.34% in the financial year 2016-17. From 1st July 2017, the complicated indirect tax structure has been replaced by a simplified tax system known as GST. GST being a regressive tax has an impact on each and every person without the distinction of rich and poor, big business house or small ones. To understand how the implementation of GST has affected the small traders, we are going to conduct a market survey in Bhubaneswar, the capital city of the state of Odisha in India. The objective of a market survey is to analyze the impact of GST on small traders who not only connect big industry to masses But also play a significant role in the sustainability of rural as well as urban economy. कौन सा टाइप का टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी या दोनों? जीएसटी और दोनों देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन तो हुआ होगा। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है रजिस्ट्रेशन हाँ, के वक्त? प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हुआ आपका? रजिस्ट्रेशन में टाइम में वो हमको तो कुछ मालूम नहीं था उस कैसे होना चाहिए कैसे, तो इसीलिए हमको थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन अभी ठीक है। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ पर आपन किसी मतलब प्रॉब्लम फेस करे पड़ला? प्रॉब्लम तो फर्स्ट फेस करिया पड़ला। हम मोर गोटे थिला मोर 13.5 थिला हम गोटे ये देई जीएसटी रे 6% गोटे करंतु, 5% गोटे करंतु, 4% गोटे करंतु, 12% गोटे करंतु, विभिन्न प्रकार कैटेगरी हमको हैरान हुआ। आप जीएसटी आसीबा द्वारा आपनकर किछि खर्च अधिक बढ़ी है? बहुत बढ़ी जाई बहुत बढ़ी है माने नॉर्मल देखो और हाँ एबे तो गोटे लोक रखे दरकार होची हिसाब करिया पई। अच्छा से लोकर हिसाब और कॉस्ट ताको तो अधिक पैसा दबाक पड़ियो सब करिया पड़ियो तेनो तो प्रॉब्लम। जी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? रिटर्न फाइलिंग में। और अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको रिटर्न फाइलिंग में? अब तक आस्ते मतलब कम रहा है। आपन जो पैन दे बिजनेस चली सेही सेम पैन अलग बिजनेस चलती ना गोटे नहीं गोटे पैन ने गोटे पैन गोटे बिजनेस आपन टर्नओवर केते माने 1.5 कोटी बेसी 1.5 कोटी कम 1.5 कोटी आबो कोटी अबव। और आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है कि ज़्यादा है? नहीं अंदर है। कम है। तो आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है? कंपोजिशन लिया है। हाँ लिया। तो कौन टैक्स पेनल्टी कम अछि तो आपन कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर दे। तो आपण किछि टैक्स कंसल्टेंट्स को जाउनंती आपण हां जाउछ ना जाउछ देखिए पे जाउछ। हां जाउ कोने दबो केमिति कोने हमें तो जाननु से बिचार किछि। आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मैनुअली मेंटेन करते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स? दोनों। किसी को रखे हैं कंप्यूटराइज्ड? आप खुद करते हैं? आप अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, मैनुअली मेंटेन करते हैं या कंप्यूटराइज्ड? और किसी को रखे हैं मेंटेन करने के लिए? हाँ एक लड़की है। अच्छा अच्छा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स रे डिफरेंट रेट थिबो तो कार रेट बॉडी थिबो कार रेट कम थिबो डिफरेंट प्रोडक्ट रो डिफरेंट रेट होची कोन हम चॉकलेट दो आपन 28% अछि तो आपन केक ऊपर अछि 18%। तो चिकन आइटम आपन 6% अछि, वेज आइटम ऊपर 4% अछि, एमती भी खाइ पारे तो सेति लागि ताकू भी वेरीफाई अपन जेती प्रोडक्ट बिकु चंदी जीएसटी तो सब प्रोडक्ट अलग अलग रेट था तो को रेट रो प्राइस पे कमी जी कार बढ़ी जी सेमती। हां 28% इलेक्ट्रिकल स्विच आइटम रे 28 दिला वेयर 28 दिला सेडो सब 18 रहबो तो जो अपन से प्राइस रेट टा कमी जी से बेनिफिट अपन मिलु जी अब अपन कस्टमर को
आमे सीटा आवेल करिनु अच्छा कि प्लस आमे 28 रे कनिछु 18 भी बिकिछु से जहा लॉस हैला 10% आम हासिल कला सीधा हम कंपनी हासिल- बियर करनी किछु करनी। और आपका जो जीएसटी के दौरान मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होंगे, तो आप अपने कस्टमर्स को वो बेनिफिट दे रहे हैं कि कम प्राइस दे रहे हैं? अभी जो जीएसटी का प्रोविजंस है, क्या आपको क्या लगता है कि क्लैरिटी है उसमें कि और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए जीएसटी के लिए? ये तो provision? ठीक ठाक है और भी क्लैरिटी थोड़ा चाहिए। थोड़ा चाहिए क्लैरिटी। आपका कोई मतलब जब जीएसटी इनिशियली लॉन्च हुआ था तो आपका बिजनेस थोड़े समय के लिए रुका था या हाँ, रुकावट हुआ था। रुकावट हुआ था? हाँ, पूरा Sales- माल बंद हो गया था, माल नहीं आया सर। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त? सेल पूरा कम गया था, माल बाहर से जो आने के लिए माल इधर आना था, नहीं आ पा रहा था, पूरा बंद हो गया था। और सब कस्टम बहुत प्रॉब्लम भी थी, क्या हुआ था कस्टमर्स? माल नहीं आ रहा था, माल आने से तो कस्टमर लेंगे ना, तो माल पूरा बंद था। तब जीएसटी जब फाइल हुआ, जीएसटी सिस्टम लोड हुआ, उसके बाद नया माल आने लगा। अच्छा, तो आपण तो किसी कहबे जीएसटी ऊपर? जीएसटी तो देखिया बोले भल जिनस किछि खराब नहीं किंतु आम ऊपर डिपेंड करछि आमे केते दूर सेटा को ग्रहण करू। और जैसे कैंपस कैंपेनिंग करके एक एक मार्केट को जीएसटी कैसा यूज़ करना चाहिए, किस टाइप का यूज़ करने से जल्दी आपको रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और किस टाइप का उसका जैसे रेड लाइन क्या है और ग्रीन कैसे, जैसे कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए और ठीक समय में आपको जीएसटी गवर्नमेंट को भरना जरूरी है। तो ऐसे करने से गवर्नमेंट बेनिफिट होगा, दुकानदार भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर भी बेनिफिट रहेंगे। थैंक यू सो मच। Greetings of the movement. I am Samiran Mishra, a faculty in Commerce and Management in D.A.V School of Business Management, Bhubaneswar. Lately, our students have conducted an educational market survey on the topic Implications of GST on Small Traders post its implementation. Now, let's discuss their observations and findings. Hello all. My first question is, was there any disruption in sale just after implementation of GST? Yes, sir. Initially, the sales have been impacted adversely, but now the market has stabilized to a great extent, although not completely. Okay. My next question is, how can we sum up all the hurdles faced by the traders after the implementation of GST? So, firstly, there was a temporary decline in sales due to the confusion regarding the treatment of input tax credit process and the time limit within which the process has to be completed. Secondly, there was increase in the administrative expenses in the form of tax consultancy charges and hiring an accountant to deal with the new tax system. And finally, our observation was that there was a delay in the return filing process due to some technical glitches, and to address this issue, government had to extend the return filing time. Okay. You said that there was an increase in administration expenses. How the traders are planning to reduce such cost? Are they planning to go for attending any workshops? No, sir. As they are small traders, they want to concentrate on their business and are availing the services of a separate tax consultant for GST matters, and also availing the services of a part-time accountant for maintaining their books of accounts. Okay. Then, in your opinion, how can we reduce such cost for the traders? Sir, this problem can be sorted out if instead of availing the services of a separate tax consultant, the traders with the help of their association can facilitate GST workshop for their accountant, so that they can acquire knowledge and skills of dealing with various provisions of GST like generation of invoices or e-way bill as well as GST return filing. Okay. Now my next question is, are the traders interested to opt for the composition scheme? No, sir. Although there are certain benefits of composition scheme like quarterly return filing, less documentation, payment of GST at a fixed rate of turnover, the traders are not interested to opt for this scheme. The reason being that input tax credit is not available to the taxpayers who opt for composition scheme. What are the demands and suggestions of the traders? Sir, their major demands and suggestions, as we have interpreted after interacting with them, are: firstly, GST network should be strengthened enough to handle more number of users at any point of time. Secondly, more clarity in the provisions of GST are required because they are changing frequently, and this can be done by making more awareness campaigns and workshops on a regular basis. And lastly, reduction in tax litigation. Amazing. Thank you all for such a pragmatic market survey.